Hello guys. In previous session, we will discuss about the basic concept of JavaScript. In this class, we will discuss about the function of JavaScript. First, we know that what is the function of JavaScript. In JavaScript, function is a reusable code which can access anywhere in a program. Using function keyword to declare the name of function in JavaScript. As for example, JavaScript code are defined in head section or body section or outside of body section, anywhere in a HTML program. Now, define JavaScript code in head section using a script tag, script type, text, JavaScript. This is the block of JavaScript. We can declare function in this block using function keyword to give the name of function, as for example xyz. This is the block of function. Hello sir. Welcome to CIMAGE. Now, this function is called body section of a program, then display apply to event and then display this message on web browser. Hello sir, welcome to CIMAGE. So try now body form input type button. Button is used for apply click event. On click function is used for apply event on program. Function name value xyz
close form. Now close body. Now close HTML. Now save this program. Function.html. Function.html. Now save this program and then view the output on web browser. View Chrome. This event apply on this button. Hello sir, welcome to CIMAGE. This is the output of this function. XYZ apply on this button event and then the output display. Hello sir, welcome to CIMAGE on web browser. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट का फंक्शन पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। आखिर जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन के इनसाइड पैरामीटर कैसे पास करेंगे और उसमें जो वैल्यू असाइन करेंगे उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन लिंक आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दिया जाएगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।